हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CS वर्ल्ड। तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की क्लास। और पहले VS कोड ओपन कर लेते हैं कि अगर कोई कोडिंग वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो उसमें हम लोग कोड वगैरह कर लिया जाएगा। ठीक है। और अपनी पाइथन वाली फाइल भी ओपन कर लेते हैं। सॉरी, पाइथन कर रहा हूँ, बुक मशीन लर्निंग रोड मैप मैथमेटिक्स फॉर ML। और यार, प्रोबेबिलिटी में कुछ ज़्यादा ही थ्योरी पढ़नी पड़ रही है और थोड़ा बोरिंग सा हो गया है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि पहले भी पढ़ा गया है, कभी 12th वगैरह में पढ़े ही हैं। बट ठीक है, देखते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। ये प्रोडक्ट रूल सम रूल तो पढ़ लिया था हम लोगों ने कल। ठीक है। बेसिकली मैं पहले थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि कोई प्रोजेक्ट वगैरह देख लिया जाए अब इस पे, लेकिन बिना कंप्लीट किए कैसे प्रोजेक्ट देखें, ये भी मैं सोच रहा हूँ। और बट ठीक है, www.google.com। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पर कुछ प्रोजेक्ट तो दिख रहे हैं मुझे। देखता हूँ क्या है कैसे है। AWS Amazon Poly text to speech। PDF CDF likelihood एंट्रोपी एंट्रोपी। हम लोगों ने कल लाइक्लीहुड तक तो देखा है, लाइक्लीहुड वगैरह 6.4 ये नहीं देखा था। मीन एंड कोवेरियंस मेरे हिसाब से ये हो गया है। PY, हाँ ये हो गया था, लाइक्लीहुड एविडेंस। और एंट्रोपी की बात करो तो इधर, अरे भाई साहब, ठीक है। तो probability distribution, exponential uniform distribution, normal Gaussian, machine learning algorithm using probability। और क्या क्या है, प्रैक्टिस, प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड डेटा साइंस। मन मैं प्रोजेक्ट ढूंढ रहा हूँ कि प्रोजेक्ट कोई मिल जाए तो पहले थोड़ा बहुत पढ़ के बस। कैन यू गिव समरी ऑफ व्हाट आर यू टीचिंग। भाई यहाँ पे चल रहा है AI ML। ठीक है, टीच नहीं कर रहा हूँ, लर्निंग चल रही है। और AI ML की लर्निंग चल रही है। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो, और अभी प्रोबेबिलिटी चल रहा है। ठीक है। लर्निंग में मतलब AI ML में हम लोगों ने अभी तक पाइथन और पाइथन के बेसिक्स, बाकी लाइब्रेरीज नमपाई और पांडाज ये पढ़ा। फिर उसके बाद पूरी की पूरी लीनियर अलजेब्रा जो भी था AI ML से रिलेटेड, उसको कंप्लीट किया है। और अभी AI ML से ही रिलेटेड चल रहा है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं प्रोजेक्ट ढूंढ रहा हूँ अभी प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड, कॉल टू एक्शन बेस्ड, जो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें।
वैसे तो अभी कुछ बहुत कुछ बचा हुआ है प्रोबेबिलिटी में पढ़ने को, बट फिर भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ शायद इम्प्लीमेंट करने लायक हो। बेसिक सेट्स नहीं यार, अभी इतना लंबा तो नहीं बना पाएंगे। मिनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन। और हाँ, शाम को हम लोग क्या करेंगे ना, जो लाइव क्लास लेंगे उसमें ओपन सीवी स्टार्ट करेंगे आज से। ओपन सीवी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिटरेचर सर्वे। हटा, पहले पढ़ लिया जाए यार, फिर उसके बाद देखूंगा प्रोबेबिलिटी के प्रोजेक्ट्स वगैरह। प्रोजेक्ट्स वगैरह तो हैं, लेकिन व्हाट इज प्रोजेक्ट्स, what is चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा समरी स्टैटिस्टिक्स एंड इंडिपेंडेंस देखना था। और we are often interested in summarizing gets of random variables and comparing pairs of random variables. A static of random variable is a deterministic function of that random variable. The summary statistics of the distribution provide one useful view of how a random variable behaves, and as the name suggests, provides number and that summarize the characterize the distribution. We describe the mean and the variance, two well-known summary statistics. Then we discuss two ways to compare a pair of random variables. First, how to say that random variables are independent, and the second is how to compute the inner product between them. Mean and covariances. Mean and covariances are often useful to describe properties of probability. ठीक है, तो मीन एंड कोवेरियंस पे आ जाओ। समराइज की तो लिखने की, और डे आज 36 है ना। डे 36 नहीं, जो 37 होना चाहिए। यस, तो 35, 36, 37। आ गया, बुक के लास्ट में आ गया। मीन एंड कोवेरियंस। Means and covariances. So the means and covariances are often useful to describe properties of probability distribution, expected values, and spread. We will see in section 6.6 that there is a useful family of distribution called the exponential family, where the statistics of the random variable capture all possible information. The concept of expected value is central to machine learning, and foundational concepts of probability itself can be derived from the expected values. Little 2000 expected value हमारी ex g of x, यहाँ पे g of x of p integration of g of x dot p of x dx. Are often useful to describe properties of probability distribution. Means and covariance. Covariance are often useful to describe properties of probability distributions.
expected values and expected value and spread. और यहाँ पर डिफिनेशन क्या था 6.3 जो चल रही है वो क्या कर रहा है, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फंक्शन g r2r of univariate continuous random variable x about to px is given by 6.3 expected value, the expected value of the expected value of a function j is to r ये expected value है of a univariate condition random variable r2r of a univariate continuous random variable x p of x is given by ex g of x और साथ ही में is equals to integration और capital X g x p of x dx. Correspondingly, the expected value of a function g of a discrete random variable is given by the expected value of g. Expected value of g of a function g of a discrete random variable x of p of x is given by a of x और यहाँ पे j of x summation of g x p x और small x is element of x cap where x is the possible outcomes. ये तो पहले ही देखा गया था कि ये क्या है, possible outcomes, the target space of the random variable x. In this section we consider discrete random variables to have numerical outcomes. This can be seen by observing that the function g takes real number as inputs. We consider multivariate random variables x as a finite vector of a univariate random variable x1 to xj. For multivariate random variables we define the expected value element wise define करेंगे तो e of x j x is equals to x1 g x1 इसी तरह से e xt और g xt element of r to the power d, where the subscript ext indicates that we are taking the expected value with respect to dth element of the vector. अच्छा ये वाली ext जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि we are taking the expected value with respect to the dth element of the vector x
Definition 6.3 defines the meaning of the notation ex as the operator indicating that we should take the integral with respect to the probability density PD here for continuous distributions or the sum over all states. Discrete distribution, the definition of a mean is a special case of the expected value obtained by choosing g to be an identity function. The mean of a random variable x with states 6.4 6.3 क्या है, ठीक है, यहाँ पे द मीन रैंडम, यह है मीन, फिर आएगा कोवेरियंस, the mean of a random variable x with states x is element of R, D is an average and is defined as ex of x is equals to ex1 x1 ext xt element of R to the power D. Where ext dth element is equals to integration of x xd p xt dxt summation of xi is element of x or xi p xt is equals to xi. x यहाँ पे if x क्या होगा, continuous random variable, continuous random variable, और यहाँ पे discrete random variable होगा, discrete random variable. D is corresponding to dimension of x. The integral and sum are over the state x of the target space of the random variable x. In one dimension, there are two other notions of average, which are the median and the mode. The median is the middle value of the middle value if we sort the values, that is 50% of the values are greater than the median and 50% are smaller than the median. This idea can be generalized to continuous values by considering the values where the CDF, where the definition 6.2 is 0.5 for distribution, which are symmetric or which are asymmetric or have long tails. The median provides an estimate of a typical values that is closer to human intuition than the mean values. Furthermore, the median is more robust to outliers than the mean. The generalization of the median to higher dimension is non-trivial as there is no obvious way to sort in more than one dimension. The mode is the most frequently occurring value. For discrete random variable, the mode is defined as the value of x having the highest frequency of the occurrence. For a continuous random variable, the mode is defined as a peak in the density px. A particular density px may have more than one mode, and furthermore there may be very large number of modes.
in high-dimensional distribution. Therefore, finding all the needs of distribution can be computationally challenging. Two-dimensional distribution illustration illustrated in figure 6.4. ये है 6.4. मीन मोड एंड ये हमारा मीडियन है. ये मीन हमारा ये है और ये मोड्स हमारे इसी के बगल में है. ये मोड्स. Distribution in bimodal has two modes, but one of the marginal distribution is unimodal. Has one mode. The horizontal bimodal univariate distribution illustrates that the mean and the median can be different from each other. While it is tempting to define the two-dimensional median to be the concatenation of the medians in each dimensions, the fact that we cannot define an ordering of two-dimensional point makes it difficult. In ordering, we mean that there is more than one way to define the relations, so that this the expected value definition is a linear operator. For example, given it be a real valued function fx, agx, bhx, where a, b is element of R and x is element of R to the power d, we obtain ex, fx, bx, dx और ag. अच्छा, fx की वैल्यू ये है तो उसको यहाँ पुट किया है और px dx ये है. ए कांस्टेंट है, बाहर ले लिया. jx है, px इसको मल्टीप्लाई किया, फिर b को बाहर किया, कांस्टेंट है h, px dx आया. ये वैल्यू हमारी इसको gx और ये हो गया bex hx for two random variables. We may wish to calculate their correspondence to each other. The covariance intuitively represent the notion of how dependent random variables are one another. 6.5 covariance univariate, covariance multivariate है. फिर covariance की जगह variance है. Empirical means and covariance. डेफिनेशन 6.5 स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट रुक रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते यहाँ पे. इसकी बुक में कुछ है.
Again, nice. दोस्तों कुछ बस 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, मैं आता हूँ। तक आप म्यूजिक सुनते रहें। अरे यार, वाली बुक बंद हो गई क्या? डेफिनेशन 6.5 स्टार्ट करना है।
ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर से आ गया। हाँ, तो मैं कुछ कर रहा था ना, छोड़ो, सब बाद में करेंगे, पहले ही सब कंप्लीट कर लिया जाए। बाकी इसमें भी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, चलो फटाफट देखते हैं स्पीड में। तो कोवेरिएंस यूनिवेरिएट की बात कर रहा है, तो कोवेरिएंस यूनिवेरिएट कोवेरिएंस the covariance between two univariate random variables, the covariance between two univariate random variables x comma y is element of R is given by the expected product of their deviations from their respective means. Product of their deviations from their respective means, that is covariance of x comma y is equals e of x comma y x minus e of x or y minus e of y. Remark: when the random variables associated with the expectations or the covariance is clear by its arguments, the subscript is often suppressed. From example, is often written as ex. When the random variables, इसको क्या लिखूंगा मैं, with the expectations or covariance is clear by the arguments, the subscript is often suppressed. For example, is often written as e of x. By using the linearity of expectation, the expression is definition exponential can be rewritten as the expected values of the product minus the product of the expected values. या अच्छा, product of minus the product expected value, the product minus the product of the expected values, The covariance of x comma y is equals to expected value of product xy minus e product of x dot e of y. The covariance of variable with itself is called the variance. This is called the variance. And is denoted by v of x. The square root of the variance is called the standard deviation. Square root of variance. Standard def is denoted by sigma of x.
The notation of covariance can be generalized by multivariate random variable definitions. अभी हमारे पास covariance है multivariate. If considered two multivariate random variables x and y with states x element of r to the power d and y is element of r to the power e respectively, the covariance between x and y is denoted as 6.6 हमारा चलेगा covariance of x comma y is equals to product of expected values y to the power t minus e of x and e of y to the power t is equals to covariance of y comma x to the power t is element of r d cross e. Can be applied with the same multivariate random variable in both arguments, which results in a useful concept that intuitively captures the spread of random variable. For multivariate random variable, the variance describes the relation between individual dimensions of the random variable. Definition 6.6 6.7 variance. The variance of the random x states this and mean vector this is defined as v of x covariance x x comma x और ये है expected value e x of x minus u x minus mu u नहीं mu म्याओ t, ठीक है, पावर t, और ये बाहर होगा फिर e of x यहाँ पे कैपिटल x x to the power t minus e x x e x x to the power t. The d cross d matrix is called the covariance matrix of the multivariate random variable x. The covariance matrix is symmetric and positive, semi-definite, and tells us something about the spread of the data on its diagonal. The covariance matrix contains the variance of the marginals. और ये है summary. X and Y negatively correlated और ये positively correlated. Negative correlated. Yeah, positive correlated. Different covariance. I denotes all variable but I. The off-diagonal entries are the covariance terms. Covariance of xi xj for I comma j is equal to 1, t I is not equal to j. This book we generally assumes that covariance matrices are positive definite to enable better intuition. We therefore do not discuss corner cases that result in positive semi-definite low-rank covariance matrices, where when we want to compare the covariance between different pairs of random variables, it turns out the variance of each random variable affects the value of covariance, the normalized version of the correlation, the correlation between two random variables given by 6.8 correlation between random variables x y जो होगा correlation of x comma y is given by COV covariance of x comma y upon square root of v of x or v of y, which is element of minus 1 comma 1 belongs to. The correlation matrix is the covariance matrix of a standardized random variable x on sigma of x.
In other words, each random variable divided by its standard deviation and the square root of the variance in the correlation matrix. The covariance and correlation indicates how two random variables are related to random variables. जैसे कि यहाँ पे 6.4 ये है और two random related positive correlation correlation x comma y means that when x grows then y is also expected to grow. Negative correlation means that x increase y decrease, x increase करेगा तो y decrease करेगा. Empirical mean and covariance. The definition in section 6.4.1 is are often also called population mean and covariance, as it refers to the true statistics for the population in machine learning. We need to learn from empirical observation of data. Consider a random variable x. There are two conceptual steps to go from population statistics to the realization of empirical statistics. First, we use the fact that we have finite dataset of size n to construct an empirical statistics that is function of a finite number of identical random variables x1 to xn. Second, we observe the data. This is we look at the realizations x1, xn of each random variable and apply the empirical statistics. Specifically, for the mean definition, we can obtain an estimate of the mean, which is called empirical mean or sample mean. The same holds for the empirical covariance. Empirical means 6.9. Empirical mean and covariance. Mean and covariance. Arithmetic average of the observation is arithmetic average of the observations for each variable, and it is defined as x bar is equals to 1 by n summation of n is equals to 1 xn. और यहाँ पे xn जो है एलिमेंट है r to the power d का. empirical mean or empirical matrix is a d cross d matrix, so summation is equals to 1 by n summation of small n is equals to 1 to n जाएगा. xn minus x to the bar xn minus x to the bar की power t. To compute the statistics for a particular dataset, we would use the realization observation x1 and xn and use empirical covariance matrix or symmetric positive semi-definite. Section 3.2.3. Three expressions for the variances. इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे. Statistical independence.
फिर इनर प्रोडक्ट रैंडम वेरिएबल, ट्रेपेजॉइड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बाकी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी 6.9 तक कंप्लीट किया है, कॉन्जुगेंसी एंड एक्सपोनेंशियल फैमिली, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा बायनॉमियल कंजुगेशन, बर्नौली कंजुगेसी, sufficient statistics। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। एक्सपोनेंशियल फैमिली तब भी है, काफी है। वाओ, चेंज ऑफ वेरिएबल्स। इसके बाद एक और टॉपिक बचेगा फर्दर, ये तो नहीं है, ये क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज हैं। जिसके बाद हमारा है कंटिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशंस, जो कि बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा सा साइकिट वाली देख लेना हूँ बुक को, उसमें क्या क्या है। डिसीजन ट्री देखा तो हम लोगों ने पहले भी है, फिर से मैं देख रहा हूँ। डेटा प्रोजेक्ट, SVM, रीडिंग डिप्लॉइंग टेंसरफ्लो मॉडल एट स्केल। चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं शाम को, ओपन सी भी देखेंगे। अभी के लिए बाय बाय। स्टैटिस्टिक्स है तो मुझे लगता है ये पढ़ना चाहिए। CDFs, continuous distribution, ये ज़्यादा इजी है क्या? इजी क्या है कि थ्योरी कम है, होनी चाहिए इसमें। पेज नंबर, कोरिलेशन अभी देख ही रहे हैं हम लोग। 1 मिनट, प्रोबेबिलिटी कहाँ गई? ये है 53। मॉन्टी हॉल, rules of probability Bayesian. Another rule of probability, binomial distribution, streak and hotspots, Bayes theorem. Random variable, PDF, CDF, correlation, Y normal, central limit theorem, hypothesis testing definitions, choosing threshold, defining the effect, interpreting the result,
क्रॉस वैलिडेशन, रिपोर्टिंग बेसिक प्रॉपर्टीज, ची स्क्वायर टेस्ट, efficient tree sampling, power estimation, guess the variance, exponential distribution। थोड़ी सी अलग अलग चीज़ें हैं, थोड़ी सी क्या, इम्प्लीमेंटेशन, बेसियन एस्टिमेशन। चल जब पढ़ना होगा तो देखेंगे, अभी के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं बाद में, यानी कि शाम को, जब ओपन सीवी के साथ देखेंगे ओपन सीवी में क्या है और कुछ इम्प्लीमेंटेशन वगैरह भी देखेंगे। बाय बाय, मिलते हैं। वो तो मैं बोला